All right, G. So, Assalamu alaikum, everyone, and welcome to another AMS session. Ask Me Anything session. हमारे this is second session जो हमारे outreach start हुई है for the fourth cohort. So, this is the second series, of many sessions that will be coming in the coming weeks. So, my name is Kamran Tawfiq Khan. I'm the program manager at National Innovation Center Islamabad. और आज का session is primarily once again for the फोर्थ कोहोर्ट जिसकी एप्लीकेशन अभी लाइव है एप्लीकेशन की ओपन है एंड फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग ऑब्वियसली दे कैन गो टू lsislamabad.com वहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक करके दे कैन फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड दे कैन अप्लाई लेकिन ये कि आज का सेशन भी उसी से रिलेटेड है फॉर दोज हु हैव येट टू अप्लाई या उनकी कोई क्यूरीज हैं और इफ देयर आर एनी कंफ्यूजन सो वील बी टेकिंग दोज क्वेश्चंस सो फॉर दोज आप जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर हैं या वेदर यू आर लाइव विद मी ऑन फेसबुक और यूट्यूब आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं एंड आई एम गोना आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस लेकिन अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस देयर आर ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आई विल अदरवाइज बी कवर so, as you know, right now NIC Islamabad applications are open for the fourth cohort. We already have, right now with us since the new consortium took over last year. So we have had a chance to work with three cohorts. Or right now, our second or third cohort is what you have live. First cohort has already been graduated, and right now we are looking for applications for the fourth cohort. There are a lot of questions related to who can apply, and there was a lot of FAQs, so frequently asked questions. तो एक तो ये कि आप इस वीक में जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक है, you guys will get a chance to see a video which has recently been shot, and इसमें हमने basically we've gone through step by step of how to fill in the application form, because the application form is the very first thing that you guys will be encountering for those who are interested in applying. The very first thing that they will be doing is they will be filling in the application form, and our application form is the most important document for and the very first step. So the very first information जो आप हमारे साथ share करेंगे उसके basis पे then we'll start the shortlisting process. So let's start answering some of the questions जो कि हमारे पास आ रहे हैं, and then we'll take it from there. Okay, so all right. So एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, आई थिंक उमर बात कर रहे हैं कि हाउ प्रोबेबल इज एन आइडिया टू गेट सिलेक्शन फॉर for selected for incubation. Probability of selection is all right. So let's go through some numbers, and these numbers are based on the the data that we had from the last three cohorts. So मैं last cohort की probability numbers से ही हम करते हैं. So we had around 520 plus applications from the third cohort, and out of those 520 we selected 30 startups. So you can say 5% is the success rate आपके लिए is 5%. So for of all 100 applications, 5 people will get a chance to be incubated. ये past का record है. So is the fuck I don't know. Let's see how it goes. How many applications we get, and then we will be able to do a series of shortlisting, because the very first obviously the first step obviously is to go through the application form, and once the application form is filled, uske baad it will go to a second round, and second round we will be conducting some interviews. जो कि फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग से शॉर्टलिस्ट होंगे, तो उसको उनके देयर विल बी डूइंग सम असेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज, एंड आउट ऑफ दोज देन वो फाइनल जजिंग राउंड में आएंगे. सो विल बी इनवाइटिंग अराउंड 60 to 70 applications, depending upon again what kind of ideas and what kind of startups we get. So based on their quality, उसके हिसाब से we'll decide कि how many will be invited for the final judging round. लेकिन then the final judging round पे जो invite होंगे, those will be so उनमें से जो cohort जो final cohort है उसमें से select होगा. So and obviously it is tough. It is not easy. I completely agree. It is tough because it's not easy to become part of NSC Islamabad.
And the reason is very self-explanatory. The reason is the kind of perks that we offer to our startups is something because आपको apart from obviously the kind of perks that we offer, so let's go through the perks that we offer. So we'll start with obviously with we'll start with the very first thing of this is जो हमारे knowledge area में आता है, and that is the so for those who become part of this cohort, they'll go through the world renowned Founder Institute curriculum. And Founder Institute curriculum is the world is one of the it's the world leading incubation program. It has chapters in over 200 plus cities. I'm their local chapter director, and it has not just local, but so in that program, the startups who become part of the fourth cohort, they will get a chance to interact with local and international mentors from all across the world. So that is one of the premier program that we offer. Apart from the FI curriculum, we also offer specialized trainings in the areas like in the specialized areas like marketing, finance, customer discovery, IP, intellectual property, just to name a few. Then we also obviously provide one-on-one coaching sessions. So the startups who get selected will be provided a dedicated coach, and those coaches are subject matter experts, and they obviously are very much experienced in their field. So they provide not only just the mentoring, but they can also provide access to the market, and and in some cases they may also provide if they are interested, and they may also fund. So apart from so that's first part is the knowledge. Second part is the access to the market, or our consortium comprising one of the top leading enterprises of Pakistan. So our core consortium comprises of Hashu Group, and then we have Fauji Foundation, and we have Telenor Pakistan. That comprise our core consortium, and then we also have over 150 plus companies, okay, which are part of the consortium in multiple verticals. Although we are sector agnostic, मतलब ये कि हम हर सेक्टर से वेलकम करते हैं, आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमारा फोकस एनआईसी इस्लामाबाद का is on health tech and deep tech. That's why we have very strong, again, health tech, we have very strong support partners like Aga Khan, Shifa International, and RMI, just to name some of the partners in the health tech domain. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ हेल्थ टेक पे या डीप टेक जिसमें एआई, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी आते हैं, हम उन पे फोकस करते हैं. वी फोकस ऑन ऑल also हम हर सेक्टर से वेलकम करते हैं कि एप्लीकेशंस आए. So let's take some questions. All right. Okay. So as I said, okay, so question है कि what's the link to application form, how we can access. So if you want to, so first thing, obviously you have to fill in the application form. So for the application form, you just go to although we provide all the links, हमारे जितने भी social shoutouts होते हैं उसमें we do provide the link, and you can directly go and to the application form. But anyways, you can go to nsislamabad.com, and once you go there, you will on the main page you will see apply now button. So just click on that and you will come to the application form. Just fill in the form. आप उसमें trick ये है कि जितने भी questions जो आपसे पूछे जाएं, जो चीजें हम आपसे मांगे, आप just fill in आप the questions जो आपसे पूछे जाएं, आप उसको properly fill out करें, and whatever things that we ask for, like we ask for your pitch deck, so you just upload the pitch deck. We also ask for 1 minute video, because in the end we also want to see the person who's filling in the form. उसमें idea नहीं होता, because people generally go for chat GPT, और chat GPT में question डाल के और answers वो upload करके हमें idea हो जाता है, because we've been doing it for more than a year, or having gone through more than thousands of applications. Idea हो जाता है कि कौन से जवाब हैं वो चैट जीपीटी से आए.
So it's better that you अपने अल्फाज में इसको लिखें. अगर obviously you're most welcome to use the LLMs, लेकिन ये कि that's when you do some prompt engineering ताकि आपके जो है answers जो हैं वो clear हों. And so the idea is to fill in the application form to the best of your abilities, and that's going to improve your chances. Whatever you ask for, आप उसको properly उसको address करें, so that you get a better chance to be shortlisted for the next round, because that's the very first thing is your application form. Okay, so any questions that you have, again, you can just write down आप अपने उसको टाइप करें ताकि मैं उसको आपको जवाब दे सकूं. All right, so मेरे पास questions आए हैं just के what about the climate or the green tech. So again, climate tech हो या green tech हो, जो मर्जी vertical हो, you all are welcome to apply. So we are sector agnostic. Sector agnostic का मतलब ये है कि आप जिस मर्जी sector से हों, चाहे आप हेल्थ टेक में काम कर रहे हैं, चाहे आप एआई में कर रहे हो, चाहे आप ब्लॉकचेन में कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, ई कॉमर्स में कर रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हैं. ऑलराइट, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ऑल्दो भी हमने इंटरनली एक डेट हमने फाइनल की है, लेकिन आई थिंक इज फॉर नाउ डोंट वरी अबाउट द लास्ट डेट बिकॉज ऑब्वियसली सो इट विल बी समवेयर इन सितंबर. अभी हम उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कि वंस वी डू दैट विल डेफिनेटली लेट यू नो कि दिस इज द लास्ट डेट एंड दैट्स व्हेन यू कैन so that you can apply. अभी आप again the advantage of applying now is कि you'll get आप you know कि आप एक दफा इसको apply, once you apply तो आपके पास ज़्यादा अच्छा चांस है कि आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो into the next round. So my advice to you is कि after this AMA, for those who are making making their mind to apply, they should definitely do that. Apply करें and and wish you all the very best once you apply. अच्छा, मेरे पास over the course of time there were a lot of questions that were asked last time. So what I'm going to do is as soon as, although for those कोई आप अगर आप questions करना चाहते हैं आप बिल्कुल उसको questions कर सकते हैं, लेकिन ये है कि I'll just go through some of the questions that were asked in the last FAQs, and those हमारे पास जो questions आते हैं in the chat. So I will just go through those questions so that you have a better chance, a better idea exactly what are the answers to those questions, most frequently asked questions. अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि what's the duration of the program for those who get selected. So it's a 12 week, so 12 months का program है. We call it 6+6. So 6+6 is 6 months is obviously is a hands-on support. इसमें हम बहुत dedicated आपको support provide करते हैं. Remaining 6 months is a hands-on and hands-off because हम हर cohort की जो induction है, after every 6 months we do that. So हर 6 months के बाद हम induction करते हैं. तो जैसे ही नया कोहोर्ट आता है ऑब्वियसली उस पर ज्यादा फोकस होता है, एंड द कोहोर्ट बिफोर दैट उनको भी सपोर्ट मिलती है, लेकिन उनको उस लेवल की सपोर्ट नहीं मिलेगी जो कि नेक्स्ट कोहोर्ट को मिलती है. लेकिन इन टोटल ड्यूरेशन ऑफ इंक्यूबेशन इज 12 मंथ्स, जिसमें हम ऑब्वियसली हर किस्म की सपोर्ट, मेंटरशिप और रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन वट एवर स्टेज यू आर. हम आपके स्टेज पे अप्लाई कर सकते हो. अगला सवाल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आप कौन से स्टेज पे अप्लाई करें. सो देयर आर 3 स्टेजेस जो कि हमने डिफाइन किया. वन इज आइडिएशन स्टेज, one is early stage, and one is growth stage. How do we define those stages? Idea stages, आपके पास एक idea है, you think okay, you should there's a problem that you think there's जो कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और उसका solution आपके पास है, and based on your expertise, based on your experience, you think that you can solve a problem. Maybe somebody else is also providing a solution, but you think that your solution is better than that. So but आपका कोई product नहीं है, आपका just an idea. So in that case obviously आप idea stage में आते हैं. Early stage, second stage is where you have a working MVP. आपके पास एक product है. You might be generating revenue out of it, or you might be pre-revenue. आपके पास revenue नहीं है, लेकिन आपकी product ready है. So in that case हम आपको early stage में consider करेंगे. And growth stage is where you have a product, you have revenue, you have customers,
but you want to grow. You might be want to explore new markets, or you want to explore new territories for your product. So these are the three stages जिसपे हम करते हैं. Idea stage, most welcome to apply. लेकिन ये कि better chance is better अगर आपकी कोई working prototype या MVP है, that's when you apply. So you have a better chance to be shortlisted into the next round. Okay. Questions आ रहे हैं साथ साथ. तो question है कि do I need to have some sort of platform ready, or can it be started from scratch? You can okay, so again आप idea stage पे apply कर सकते हैं. You don't need any solution to apply. लेकिन आपके obviously chances बढ़ जाते हैं अगर if you have something, अगर आपकी कोई MVP या ready, even if अगर prototype level पे भी आपका तैयार है. And nowadays thanks to AI, product development बहुत ज़्यादा easy हो गई है. So I don't think so the problem as far as the product is concerned, that shouldn't be any issue for you. So it's better that once you are applying, अगर आपकी product तैयार है, so it will be a good thing. What about accommodation? No, we don't provide any kind of accommodation. All right. Questions. Okay. Okay जी. So उसके अलावा जो हमारे पास questions आते हैं कि like do I need to pay any kind of fee to join the program? So the program is fully funded by the government of Pakistan through Ignite. Ignite is a national technology fund which comes under Ministry of IT and Telecom. So you don't, obviously it's fully funded. So what you guys receive, the startups, those who get selected, they receive the free office space. Obviously they get support in the Founders curriculum. They get mentorship and all kind of support at no cost whatsoever. Timings of NSC Islamabad facility, हमारे जो है facilities open from Monday to Friday 9 AM 5:30 PM हमारे timings हैं. फिर एक question हमारे पास बहुत आता है कि are only health tech and deep tech startups eligible to apply? So उसका मैं already address कर चुका हूँ कि although हमारा focus is on health tech and deep tech, हम एक special emphasis देते हैं because that's our mandate हमें यही मिला है कि हम health tech और deep tech पे focus करें. लेकिन हम all tech and tech enabled startups को welcome करते हैं जिनके if you have an innovative solution, if your idea has a potential to scale, obviously we encourage you to apply. The process of getting incubated into the program. So एक question ये भी आता है कि what is the process? And the process is the first, obviously, the first step, obviously, you have to fill in the form. So application submission, so you have to अपना online application form को submit किया. उसमें से first round of shortlisting होती है, initial screening होती है जो कि हमारी team करती है और shortlist करते हैं high potential applicants को. उसके बाद फिर second round होता है. Second round of उसमें we invite the shortlisted candidates for interviews, and उसमें से then we go for another round of shortlisting. उसमें से जो shortlist होती है, final shortlisting होती है, वो shortlist founders वो फिर उनको invite किया जाता है to present their idea to the panel of mentors and experts. So you have to come in person in case you are based in Islamabad or Pindi. In case you're from anywhere, any place other than Pindi, Islamabad, you can pitch virtually. तो उसमें से जो after that final judging round, जिसको हम कहते हैं final judging round में pitch करने के बाद उसमें से जो merit बनता है, that's so that's the final cohort जो कि फिर हम announce करते हैं, जो कि combined evaluation होती है based on the final scores of the judges. And फिर हम एक test basically हम एक link share करते हैं Founder Institute का, हम कहते हैं as a founder's DNA assessment test कहते हैं. So basically it's an online test. You basically see are you eligible to, basically it's an online test to assess आपका कितना potential है to become a founder. So
टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट के जो स्कोरिंग है उसमें से जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें से फिर हम एंड दैट्स व्हेन सो फाइनल कोहोर्ट फिर उसके बाद भी अनाउंस जब वो अनाउंस होता है सो यू गो थ्रू ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑनबोर्डिंग का पूरा प्रोसेस है जब आप पूरा ड्यू डिलिजेंस ऑनबोर्डिंग का कंप्लीट करते हैं दैट्स व्हेन यू आर इनवाइटेड फॉर द ओरिएंटेशन डे और फिर आपकी जर्नी हमारे साथ ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है सो इसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी लूंगा जो हमारे पास है कि क्वेश्चन है मेरे पास एक आया है आई एम वे अहेड ऑफ आइडिया स्टेज आई नीड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अपस्केलिंग सो ओके हम एनआईसी इस्लामाबाद डजंट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फंडिंग हम फंडिंग प्रोवाइड नहीं करते लेकिन वी डू प्रोवाइड एक्सेस टू एंजल्स एंड वीसीज एंड but that access is provided to those who are investable so if you अगर आपके let's suppose कि आपके और if you are investable means कि आपके numbers are right you know your market you already have attraction you already have customers and you know आप already वो सारी चीजें पूरी करते हैं तो फिर obviously you will get a chance to through an SE Islamabad platform to pitch in front of investors angel and VCs and and if obviously angel investors think yes your startup is investable so obviously वो फिर आपको ऑफर आती है तो वहां से बिल्डिंग आती है लेकिन otherwise NSE Islamabad doesn't provide any kind of funding itself uh, what okay so what about office for work so so there's no proper office यानी कि we don't provide any kind of cabins obviously हमारे open houses भी होते हैं और open house में for those based in Pindi Islamabad they are most welcome to attend those open houses you come and you meet me and my team as well in person so आपको पूरी facility का obviously हम tour भी देंगे और आपको बताएंगे भी exactly what exactly would we do and you'll also get a chance to meet with some of our startups as well so okay what if we fail अच्छा again so इसमें fail और pass का scene नहीं है in the end it's all about whether you come on merit or not merit obviously depending upon different factors उसके base पे obviously it's as I said it's not easy to become part of the cohort it is very difficult और वो किस तरह मैं कह रहा हूँ as I said कि last जैसे मैं आपको example दी कि last cohort में we had around 520 plus applications and out of those 520 or 30 were selected so around 5% of success rate बनता है it doesn't mean that you don't have a chance if you believe and that your startup has the potential and it requires that support जिससे आप obviously आपकी जो है growth जो है वो 10x होती है so you should definitely apply all right will the utilities be included in for those renting office space so हम रेंट पे नहीं ऑफिस स्पेस इज फ्री ऑफ आपके लिए एक साल के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑफिस स्पेस यूज कर सकते हैं एंड दैट इंक्लूड्स ऑल द यूटिलिटीज इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है लेकिन if you're looking for office space you should not come to NSE Islamabad because if that's what you're looking for if you again that will be a wrong reason to apply if you're looking to make your startup grow global and if you have what it takes अगर आपको लगता है कि you आपके startup में potential है to become the next unicorn next big company next multi-million dollar company definitely in that case you should apply for the right reason that's what I will definitely be saying you question is sir are textile companies allowed in utilizing tech depending upon if there is a tech involved अच्छा तो what kind of startups जो है जिनके chances कि भी उनको हम startup category में उसको हम उनको नहीं कहते if number one obviously if it's an NGO if you're not obviously it's a non-profit है non-profit should not apply non-profit if it's a generic business कोई it doesn't have any tech element so also they should not apply but अगर आपके ideally if it's a product based company and has a tech element definitely you should apply
अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप किसी कंपनीज को सर्विसेज दे रहे हैं, नो यू शुड नॉट अप्लाई, बिकॉज दो आप टेक्निक आप स्टार्ट लेट सपोज आप किसी यूएस में या यूरोप में या कहीं पे आप सर्विसेज दे रहे होंगे, लेकिन आप दूसरों को सर्विसेज दे रहे हैं तो आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है, सो यू नो यू शुड नॉट अप्लाई इन दैट केस. बट इन केस अगर आप कहते हैं कि आप सर्विसेज दे रहे हैं सेपरेटली, लेकिन यू हैव अ सेपरेट एंटिटी, आपकी अपनी प्रोडक्ट भी है, यू यू हैव सेपरेट, सो इन दैट केस यस यू कैन अप्लाई. आप सो our founders who intend to run software marketing are eligible to apply. मैंने वही उसका जवाब दिया कि अगर आपकी सॉफ्टवेयर एजेंसी है या मार्केटिंग एजेंसी है, फिर आप अप्लाई उसी सूरत में कर सकते हैं. अगर आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है तो आप उस प्रोडक्ट कैटेगरी में आप कर सकते हो. ओके. So I have so sir so like I have textile company, it heavily utilizes tech. आप अप्लाई करो and then we will see कि वो क्या उसका स्टार्ट कैटेगरी में आता है, so then we will definitely look into him. अच्छा, so then I have questions. Sir, I have a company registered with the SCCP. I want to start a startup in health tech. I have been to USA. Good for you. Definitely आप अप्लाई करें. अगर आप अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और आपने कुछ आप अभी so it looks like you have an ideation stage, तो आप अप्लाई बिल्कुल करें, बिल्कुल मोस्ट वेलकम टू अप्लाई. ओके. अच्छा, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन अंडर ग्रेजुएट अप्लाई? सो हमारा irrespective of your age, हमने there is no limit whatsoever. So as example I can give you, हमारे third cohort में we have the youngest I think NIC Islamabad की history में one of the youngest founders, she's a 13-year-old kid. So she proper compete करके she became part of the third cohort. So age doesn't matter. Undergraduate है, आपकी एजुकेशन है या नहीं है, हम उस चीज पे जज नहीं करते. व्हाट यू वांट टू सी इज कि क्या आपका स्टार्टअप में पोटेंशियल है टू बिकम द नेक्स्ट मल्टी-million dollar कंपनी. इफ दैट इज द केस यू शुड अप्लाई. एज डजंट मैटर. सो ओके, सो डेफिनेटली अप्लाई करें आप. ओके, सो आई हैव 1.5 years in e-commerce. अगर आपका ई-कॉमर्स में एक्सपीरियंस है तो ई-कॉमर्स को मोस्ट वेलकम. यू वांट टू दे कैन डेफिनेटली अप्लाई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. और ई-कॉमर्स का आपका ब्रांड है, कैन आई गेट स्पेस? देखिए, अगेन स्पेस आपको तब मिलती है जब आप कोहॉर्ट का हिस्सा बनते हैं. दैट इज वन ऑफ द पर्क्स दैट वी प्रोवाइड अगेन. बट इफ योर रीजन इज जस्ट फॉर द स्पेस एंड यू अगेन, हमारा प्रोग्राम इज वेरी टफ. यू हैव टू गिव इन योर फुल ऑफ द प्रोग्राम. हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप 24 फॉर दोज हु बिकम पार्ट ऑफ द कोहॉर्ट कि आप हर रोज आएं. लेकिन ये कि हमारे जो प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फाउंडर इंस्टीट्यूट, और हमारे वीकली सेशंस होते हैं एंड दैट इज मैंडेटरी टू अटेंड. सो उसमें आपने ऑब्वियसली फॉर दोज हु बिकम दे हैव टू बी. And explain the intro part, please. What exactly are you looking for? So what we are looking for, we are looking for founders who are, number one, their idea or their startup is solving a problem and it has potential to become the next multi-million dollar company. The founder has the founder is coachable, and the founder is ready to go through the tough part that is because again the program is very tough. Okay, the question is, can we use facilities like 3D printers, etc.? So हमारे पास we have हमारा makers lab is available for hardware startups, so they can definitely utilize those. Okay, so you guys can utilize that maker space. Okay, so let's go through some other questions. Okay, climate tech.
I don't know आप किस पे हो. हाजिर आपका क्वेश्चन है. What about, if you could kindly आप थोड़ा क्वेश्चन को अपना दोबारा से रिफ्रेश करें. What is exactly your question is? Climate tech definitely अप्लाई कर सकते हैं, provided you fill in the form, and then whatever stage you are, we'll see whether you are eligible to be shortlisted for the next round or not. But climate tech भी हमारे पास cohort 3 में we have many startups जो कि climate tech पे काम कर रहे हैं. Okay, तो अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन बहुत जो कि मैं ऑलरेडी उसको मैंने एड्रेस तो किया है, लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई शुड आई अप्लाई, मैं क्यों अप्लाई करूं. ठीक है. So what you will get if you apply for the NSE Islamabad program? We'll start first with the global curriculum. So you'll get access to the world-renowned Founder Institute, curriculum and its methodologies. You'll get mentorship from local and international mentors with deep industry expertise. Then, in addition to FI, you will also get specialized trainings, which are tailored to founder real challenges, for example, market, finance, product development, and many other areas. Then you will also get one-on-one support from experienced startup coaches. You will also get industry linkages. It means that you'll get introductions to corporate, government bodies, and ecosystem partners as well. You'll also get visibility. You'll get a chance to showcase your startup at national and international events. So some of our startups, they got a chance to attend the events like Gitex in Dubai and Leap in Saudi Arabia, one of the leading tech events in the world. Then as I said, you will also get direct introductions to angel investors and VCs once we believe that you are investor ready. And obviously, our community is very strong, so you'll get a chance to become part of network with peers, alumni, and partners who support each other growth. Question is, how can you help me market research for exam? Okay, so it's an irrelevant question. आपके अगर कोई exam वगैरह है तो it has nothing to do with us. Okay, so all right, so अच्छा ठीक है. So again, आपको जो है definitely for those who become part of a cohort, आपको बहुत chance मिलेगा to as far as the market access is concerned, because as I said, our consortium is one of the top consortiums that we have, comprising the likes of Harshad Group, Fauji Foundation, Telenor Pakistan as our core partners, and then we have over 150 plus companies in support partners. तो वो हम प्रोवाइड करते हैं. अगर सर कंपनी आईफोन और मैकबुक, हम नो सॉरी, वी डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर. वी डू प्रोवाइड यू स्पेस एक्सेस, but you have to bring in your own laptops. All right. So okay, फिर एक और बड़ा important question है. I think ये जो यहाँ पे आया क्वेश्चन आया कि what does the equity breakdown looks like when you sign with NIC? So NIC Islamabad doesn't take any equity. So we don't take any equity from you guys. In fact, जो हमारा Founder Institute, जो again, now Founder Institute generally, if you become part of FI externally, आपको वहाँ पे उनको equity देनी पड़ती है, around 2.5% की equity आपको देनी पड़ती है. लेकिन once you do FI through NIC, you don't even have to pay that equity as well. So आपको ना कोई पैसे देने हैं, ना आपने कुछ वो करना है, ना कोई equity देनी है. It's completely free of cost. So
अच्छा, फिर एक क्वेश्चन है, क्या हम प्रोडक्ट आइडिया देकर लॉन्च कर सकते हैं एनआईसी की हेल्प से? देखिए, आप आइडिएशन स्टेज पे अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, एंड अगर आप पोटेंशियल है तो और आप सिलेक्ट हो जाते हैं और आपके अभी प्रोडक्ट नहीं है, तो हमारा मेन ऑब्वियसली फर्स्ट सपोर्ट दैट वी वुड बी गिविंग यू इज टू इंश्योर दैट कि आप एज सुन एज पॉसिबल यू लॉन्च योर प्रोडक्ट। हम उसमें ऑब्वियसली आपको सारी सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, लेकिन इन द एंड वी वोंट रन योर स्टार्टअप। हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, हम आपको रिसोर्सेज दे सकते हैं, हम आपको एक्सेस दे सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज दैट startups need, especially those who are working in the SaaS domain, is the credit, cloud credits. So cloud credits pay generally, they say कि हमें AWS के credits चाहिए या Google credits चाहिए. So we have partnership with both AWS and Google के साथ हमारी partnership है. So for those who become part of NIC Islamabad fourth cohort, they will get a chance to apply for cloud credits of AWS up to 10,000 US dollars and Google credits up to 25,000 US dollars तक के. तो वो हम सपोर्ट देते हैं, स्पेशली फॉर दोस्त जिनको क्लाउड क्रेडिट्स की जरूरत है, स्पेशली फॉर देयर SaaS. All right. So how does NIC sustain itself? So NIC, again, it's backed by the government. So don't worry about that. As far as हमें आपके you don't have to worry about it. हम कैसे sustain करते हैं? It's a government funded program. All right. How to join in as an investor? Okay, that's a good question. So if you are interested to join in as an investor, again, you're most welcome to contact our team, and then we'll see again how we can हम आप किस तरह उसमें वो कर सकते हैं. हम कोई अच्छा again कोई गाड़ी शाड़ी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, सॉरी आई डोंट नो ये किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं. So no, we do not provide any kind of transportation. क्या आप कहोगे, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे लैपटॉप भी चाहिए, मुझे ये चाहिए, सॉरी, we don't give that. All right. So okay, हमारे पास questions इस वक्त जो हैं, I think most of the questions तो मैंने address कर लिए हैं, लेकिन I'll once again go through I'll once again go through what I have covered at the start of the AMA session. Okay, our applications are open. हमारे fourth cohort की applications open हैं for those who are interested to apply. You guys are most welcome to apply. आप apply कर सकते हैं at nicislamabad.com. वहाँ पे जाके आप apply now पे click करेंगे, and that's where you fill in the application form. And I wish you all the very best. अगर आपके और भी questions हैं, we'll do a series of AMAs. It's not just it's the very it's the second AMA session that I'm doing, but we will also be doing a series of AMAs. I believe after every 10 days के बाद, और फिर बाद में इसकी intensity इसकी हम थोड़ी frequency change कर लेंगे, score जल्दी करेंगे. As soon as we go close to the deadline and to the final date, हमारी जो application की deadline है वो हम बहुत जल्दी announce करेंगे. लेकिन ये है कि आपके जो भी questions सब साथ साथ आएंगे, उसमें obviously we'll be able to answer all those questions. अच्छा, चलिए, लास्ट मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई. अच्छा, रिक्वायरमेंट्स अगेन इज क्या आपका कोई आइडिया है, यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन सम स्टार्टअप्स, यू हैव अ वर्किंग प्रोटोटाइप, यू हैव एन एमवीपी, और मे बी यू ऑलरेडी आर सर्विंग इन द मार्केट, आपके स्टार्टअप है, आप पे काम कर रहे हैं, एंड यू थिंक यू वांट टू अप्लाई. तो इन दैट केस गो टू nicislamabad.com. nicislamabad.com पे जाएं, वहां पे जाके आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, एंड दैट्स वेयर यू फिल इन द एप्लीकेशन. The application form आप fill करें, and that's the very first step that you need to do. I wish you guys all the very best, and hope to see you guys soon in the next AMS session. So thank you so much, and take care. Allah Hafiz.